Hello guys, good morning. uh, yes, so do I see some people here? In the saluting base, the NCC Boys Marching Contingent comprising 100 young and smart senior division cadets led by Senior Under Officer Shailendra Singh Rathore of the NCC Directorate, Rajasthan. With commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 14 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth organizations in the world. At the forefront of nation building through its youth. These cadets have excelled in humanitarian aid, sports and adventure activities. Following the NCC Boys Marching Contingent, we have the military band, the combined military band consisting of 48 musicians, marching smartly to the rhythm of Kadam Kadam Badhai Cha, the NCC Girls Marching Contingent. Right. So guys, so let me introduce myself. I'm Group Captain Rajesh Pandey, an Air Force veteran, first assessor on board Unacademy. Graduated from the National Defence Academy. Have put in over 31 years of service in the Air Force. Been a former assessor with over 4,000 selection interviews. Former head training division at Defence Institute of Psychological Research. Trained senior officers from the services as interviewing officers. Overseen the training of GTOs and psychologists. Interview consultant and your SSB mentor. So this is as regards my introduction is concerned. So SK, yes, SK Jai Hind, which entry you're going in for? Are you going in for an NCC entry?
So welcome all of you, who are going for NCC Special Entry. I would like you to tell me what are your dates and which is the center that you're going in for. Yes, so what date and what center? Are you a fresher or are you a repeater? SK. Normally होता क्या है? So what do you see? What is special about NCC entry? Let me just refresh. Just give me a time to refresh so that you can have the video again. ऑलराइट, सो जैसे मैंने बताया आपको एनसीसी एंट्री की एक जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे रिपोर्टिंग बहुत हाई होती है, वेरी हाई रिपोर्टिंग, राइट, एंड वेरी लो स्क्रीनिंग परसेंटेज. सो यू नॉर्मली हैव एनसीसी एंट्री जहाँ पे you can have as many as 300 candidates reporting, right? So nearly 300 candidates reporting and just about 30 odd candidates getting screened in. So सबसे बड़ा चैलेंज तो एनसीसी एंट्री में यही होता है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ. तो एनसीसी के लिए आपको एक तो स्क्रीनिंग की बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है. एसके क्या कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ what is your qualification? Now those with good communication skills, they tend to do better. अगर आपकी communication skills अच्छी हैं, so आपका performance is expected to be better, right? Normally क्या होता है कि communication skills में काफ़ी लोगों को परेशानी हो जाती है, right? Those with better balance between academics and NCC activities, they tend to do better. So you need to strike some kind of a balance between your academics as well as NCC activities, because NCC activities में आपको बहुत सारे बहुत समय देना पड़ता है आपको. You need to spend a lot of time for various camps, various activities, drill, rifle shooting, and various other things, right? Social activities, etc. Those with better understanding of basic concepts, right, they again tend to do better. Now basic concepts की जब हम बात कर रहे हैं, आपका हम grasp की बात कर रहे हैं. So how good is your grasp, right? So आप चीज़ों को अगर जल्दी समझ पाते हो, that also helps. Those with extraordinary achievements like आपका youth exchange program, Republic Day camp, or various such things, if you have some good achievements in NCC, definitely you stand a better chance. तो आपके achievements जो हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक. Now if you see in NCC, you have
various camp, all India थल सैनिक कैंप, वायु सैनिक कैंप, नौ सैनिक कैंप, राइट. सो इन सब चीज़ों में आपकी पार्टिसिपेशन डेफिनेटली वो ज़रूरी है, बिकॉज बगैर इन सब कैंप्स के आपको सी सर्टिफिकेट भी नहीं मिलता है. करेक्ट. What are the various activities? I have interacted with so many NCC cadets, and those who are really sincere, they are very motivated. Unka motivation level is also very high. So for the first time, they have learned how to shoot, rifle shooting, obstacles, right? Obstacles आप दूसरे उसमें भी कर सकते हो, लेकिन things like rifle shooting, drill, camps, adventure activities, and a lot of other social activities also. ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका मौका आपको एनसीसी में विशेषकर मिलता है. Then if you come to sports also, you have various sports. ठीक है, इसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स भी शामिल हैं और दूसरे स्पोर्ट्स भी शामिल हैं. Besides this, there are a lot of social awareness activities. They can be camps about environment, they can be Swachhta Abhiyan, Ganga cleaning, and there are so many other such things, activities, tree plantation. So इन सब चीज़ों से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. And the most important thing that you learn through all this is working in a team, working for a cause, right? And facing difficulties. कोई भी परिस्थिति होती है, even in say COVID, during the COVID time, there were certain NCC units, which were asked to help out the administration, the civil administration. वैसे कई जगह हमें दिखाई देता है कि आप कोई फेयर होते हैं, ट्रेड फेयर्स हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई, गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, उसमें भी आपका योगदान काफ़ी रहता है. सो देयर इज सो मच दैट यू लर्न थ्रू दीज इंटरेक्शंस, एंड आई एम श्योर यू गेट सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट. सो एसके, आप बताओ, आपको एनसीसी आप अगर कर रहे हो तो आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? आपको लग रहा है कुछ फ़ायदा हो रहा है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, you could be doing dramatics, you could be playing a sport, you could be doing various other activities, right? प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो. सो इन सब चीज़ों में आपको बहुत सारा एक एक्सपोजर मिलता है जो कि एक आम इंसान को नहीं मिल पाता है. Then you have this bonding, right? An extremely strong bonding, because आपका रगड़ा इकट्ठा जब लगता है, कैंप्स में हो चाहे दूसरी जगह में हो, so there is a lot of bonhomie or lot of camaraderie, which you develop as a result of activities in the NCC. Then you have youth exchange programs. Now, not everyone gets a chance to participate in this youth exchange program, lekin yes, there are people who participate in this, and the competition is very tough. So इसके आप कितने साल हो गए आपको एनसीसी में पार्टिसिपेट करते हुए? हाउ मेनी ईयर्स हैव यू कंप्लीटेड, एंड व्हाट ऑल कैंप्स हैव यू अटेंडेड? आर्मी विंग, नेवी विंग, एयर विंग, कौन से विंग में आप कर रहे हो? राइट. सो ऑब्वियसली अगर आपके पास में एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, सो यू गेट लॉट ऑफ प्रिविलेजेस. व्हाट आर द प्रिविलेजेस यू गेट? इज यू गॉट अ वेरी वाइड एक्सपोजर ऑफ आर्म्स ट्रेनिंग, कैंप्स. देन आपका डिसिप्लिन हो गया, सोशल एडजस्टमेंट जैसे मैंने बताया, पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज़, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मोटिवेशन. यू आर ऑलवेज इन कंपनी ऑफ officers and other instructors. You visit some military stations, you have camps. तो मोटिवेशन की तो कोई कमी नहीं होती है. Am I right? SK?
हाँ, तो एनसीसी कैडेट डेफिनेटली एक मोटिवेटेड कैडेट होता है. CATC and SNIC camps. So it is a competitive word. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, राइट? बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ड है. देर आर टू टाइप्स ऑफ एनसीसी कैडेट्स. डिसेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, जिनकी एक बैलेंस लाइफ होती है, दे आर बेटर ऑर्गेनाइज्ड, और दूसरे ऐसे होते हैं जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड इज़ नॉट वेरी गुड, तो इंटरेस्ट इन स्टडीज़ इज़ परहैप्स नॉट एज मच, फोकस स्टडीज़ में इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन वो किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं. सो इसके आप कौन से कैटेगरी में अपने को मानते हो? आर यू इन कैटेगरी ए और यू आर इन कैटेगरी बी? तो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है? Good in both, so that's very nice. So if you can strike a balance, so this is a very, it's a very healthy situation. इससे क्या होता है कि हमें ये लगता है कि yes, you are not there in NCC just for the sake of participating in certain activities. You want to have an all-round growth, all-round development, right? तो it is, और जब आप academics को अच्छी तरह से संभाल सकते हो और साथ में दूसरी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, दैट शोज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट. आप यू बिकम मोर एफिशिएंट. ओनली एफिशिएंट पीपल आर एबल टू डू दिस मल्टीटास्किंग, और मल्टीटास्किंग से आप टाइम मैनेजमेंट भी और बेहतर सीख जाते हो, राइट? सो इफ़ यू थिंक यू आर इन कैटेगरी ए, जहाँ पे आपका एक बैलेंस है बिटवीन एकेडमिक्स एंड एनसीसी एक्टिविटीज़, obviously you stand a better chance. Now जो मेरी एडवाइस है एनसीसी कैडेट्स के लिए is that you need to have an improved awareness. आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, this has to be good, right? Knowledge of basic academic concepts. Now this is also something which is often asked by the interviewing officer. Now इस चीज़ में जब मैं आपको बता रहा हूँ, तो ज़्यादातर जो एम्फेसिस है आपका इंटरव्यू में, काफ़ी एम्फेसिस होता है इसमें, बिकॉज इंटरव्यू में आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत डिटेल में पता किया जा सकता है, राइट? ओके. प्रत्युष प्रियम इससे AEC डायरेक्ट एंट्री बैंड बंद हो गई है क्या? सो आई कैन नॉट रियली से वेरी मच ऑन दिस, राइट? AEC का डायरेक्ट एंट्री बंद हो गई है. डेफिनेटली इनटेक तो थोड़ा सा कम हो गया, इनटेक हैज़ बीन रिड्यूस्ड, ऑलराइट? सो इम्प्रूविंग योर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्पोकन इंग्लिश, लाइक आई सेड, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, दे हैव टू बी गुड. प्रेजेंटिंग योर अचीवमेंट्स. नो, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज दैट यू नीड टू प्रेजेंट योर अचीवमेंट्स fairly well. मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ. There was one of the candidates, who was a NCC candidate, and he had gone for youth exchange program. He had done NCC, he had done para jumps, right? And academically also he was good. And he had gone to NCC entry, he had gone to various other entries, but somehow he was never able to project his true achievements. He never talked of, in fact he was taking guidance from me and he was there with me for nearly 1.5 to 2 months. तो पहले करीब 1 महीने तक he never told me that he has done para jumps as a part of NCC. He did not tell me that he was a part of youth exchange program. So basically he was a candidate who was a little shy of telling about his achievements. Now
if you have done something, you have achieved something, it is always important that you project this, you do project this, और आपको मौका इंटरव्यू में मिलता है इन चीज़ों के बताने के लिए, राइट. सो जब आपसे पूछा जाता है कि ओके टेल मी which all what all activities have you done in your school or college, any achievements you have, any challenges have you faced, right. So इन सब चीज़ों को आपको इसी दौरान बताना होता है, जिसे हम CIQ1 बोलते हैं या रैपिड फायर. आप अक्सर people confuse this with rapid fire. So उसमें जहाँ पे आपको एकेडमिक स्कूल्स और कॉलेजेस के बारे में जो बात होती है, so that is the time when you need to mention about your achievements. So and this also happened when I was I had called one of my friends who was a para jump instructor. So he was giving a talk about how para jumps are done and किस तरह से जिनको पहले दिक्कत भी होती है कुछ जंप करने के लिए, जो हेजिटेट करते हैं, उनको कैसे करेज कैसे उनमें डेवलप हो जाता है, कैसे उनको हिम्मत आती है. सो जब ये सब बात हो रही थी एंड दिस कैंडिडेट वाज आल्सो अवेलेबल एट दैट टाइम, सो दैट इज़ द टाइम व्हेन ही टोल्ड मी, सर पैरा जंप तो मैंने भी किया हुआ है एनसीसी में. तो आई सेड सो फार व्हाई यू नॉट टोल्ड मी, एंड आई एम श्योर ही इज़ नॉट सेड दिस इवन इन एनी ऑफ हिज SSBs, right? He had appeared for about 5 SSBs till then. Youth exchange program also, he said, sir, I have taken part in youth exchange program. So I told him, I said, no, you got so many achievements, why have you not talked about it? So next SSB, he went with all this, what you call, confidence, which he had gone. Naturally, अगर आप इस लेवल पे जा रहे हो, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में आप जा चुके हो, यू रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, आप पैरा जंप कर चुके हो, यू हैव बीन एन अंडर ऑफिसर, राइट. सो इससे आप में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस तो आता ही है, लेकिन उसको आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हो. आप व्हेन यू आर टोल्ड देन ओनली यू प्रोजेक्टेड, राइट. सो इन दिस नेक्स्ट SSB अटेम्प्ट ही क्वालिफाइड, ही वेंट टू OTA and in the meantime he had also appeared for an IMA entry. He cleared that entry also. He joined OTA. By the time merit came for IMA, he had finished a few months, maybe 2-3 months in OTA, and then he left OTA and joined IMA. Right, today he is a captain with the Gorkhas. So what the point I'm trying to make to you people is that you need to project what you have done. ठीक है, जब तक आप खुद नहीं बताओगे तो किसी को कैसे पता लगेगा, isn't it? And इतना वक्त किसी के पास में नहीं होता है कि he will try and do these things on your behalf. ठीक है, so you have to talk about your achievements. What are your reasons for choosing NCC? Now this is another thing, reasons for choosing NCC. Why have you chosen NCC, right? So Pratyush, आप are you also an NCC cadet? Pratyush Priyam. Right. So achieving a balance between NCC activities and studies. Now these are the things that you need to have your answers ready. Now आपको SSB attempts जो मिलते हैं, you will only get one attempt for a particular course. Let us say हम एक particular course की बात कर रहे हैं, regular course CDS के थ्रू आप जा रहे हो. सो वहाँ पे ये तो आप CDS के रिटन के थ्रू जा सकते हो या फिर आप NCC के थ्रू जा सकते हो. You cannot have two choices. You will have only one entry. Okay, only one chance for a particular course. So like I said, reasons for choosing NCC, your achievements, your failures and lessons learned, what have been the challenges and what are the improvements that you have been able to achieve in the as a part of NCC. Things that you need to work on is your communication. You should be able to express yourself very clearly. Then practice OIR as much as possible, right? This is one weak area as far as the majority of the
NCC Cadets are concerned, right? OIR थोड़ा सा कमज़ोर रहता है. General awareness, आपकी general awareness is something that the interviewing officer is definitely going to look for. Basic academic concepts, analytical aptitude, right? So news, आपको पता है कि yes, कई तरह की न्यूज़ होती है, लेकिन उस न्यूज़ को आप कैसे इन्फर कर रहे हो, कुछ तरह से आप उसको रीजन आउट कर सकते हो, कैसे आप उसके बारे में उसको एनालाइज कर सकते हो, उसका इम्पैक्ट क्या है ऑन अ कंट्री और ऑन द सोसाइटी. दैट काइंड ऑफ एन एनालिटिकल माइंड यू नीड टू डेवलप. So you need to identify this SK, right? Your failures and lessons learned. Identify the challenges that you have faced. How did you face those challenges? Identified your areas जिसमें आपने improvement दिखाया है. What have been your areas of improvement, right? So value addition कितना किया आपने NCC की वजह से. आहा moments आपके कौन से हैं, ठीक है? So these are the kind of things that you are expected to do. Yes. So as far as I am concerned, this is what I have to say. Now if you have any questions, right, any kind of doubts regarding NCC entry or anything on the SSB entry, you can ask me, right? So any questions? सो आपके कोई भी अगर डाउट्स हैं रिगार्डिंग एनी एक्टिविटी एज फार एज द SSB इज कंसर्न इन जनरल, यू कैन आस्क मी, राइट? अदरवाइज यू कैन सी मी ऑन अनअकैडमी में, आप मेरे को देख सकते हो, राइट? अनअकैडमी प्लस और स्पेशल क्लासेस में आप मेरे को देख सकते हो. So I keep taking these special classes on various subjects, various topics. Okay. एक अभी मैं नया कोर्स शुरू कर रहा हूँ, न्यू कोर्स ऑन PPDT, राइट? PPDT पे एक नया कोर्स शुरू हो रहा है फ्रॉम 8th of August. Right? And आप you can join Unacademy Plus category, आप join कर सकते हो for a very structured kind of a guidance. Structured guidance आपको चाहिए तो आप plus courses join कर सकते हो, and otherwise you can always go for the special classes and you can use this educator code for a discount, Captain Live, right?
So that's it, guys. So if you do not have any doubts, then we'll call it off, and Jai Hind.